welcome back to Boundless Learning. In this video, we'll be covering the topic of cell organelles. So, cell organelles का हमने basic discuss कर लिया कि cell organelles होते क्या है. They perform variety of functions in a eukaryotic organism or a eukaryotic cell. All of the organelles are enclosed by membranes. Either they can be single membrane structures or they can be double membrane structures. So the first cell organelle is endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum क्या होता है? If we look at the definition of endoplasmic reticulum particularly, endo means inside, plasmic means cytoplasm, and reticulum is a network of membranes. So endoplasmic reticulum is a complicated and interconnected system of membrane bound channels and tubules. It is spread throughout the cytoplasm. Now endoplasmic reticulum is of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसके मेम्ब्रेन पर जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द वन व्हिच डज नॉट हैव ribosomes attached to its surface. So rough endoplasmic reticulum helps in the synthesis of proteins, whereas smooth endoplasmic reticulum helps in the synthesis of lipids. You can look at this diagram. The endoplasmic reticulum, the membrane of the endoplasmic reticulum is in continuation with the outer membrane of the nucleus. Two types of endoplasmic reticulums are rough endoplasmic reticulum, which has ribosomes on its surface, and smooth endoplasmic reticulum, which does not have ribosomes on the surface. The functions of endoplasmic reticulum is that endoplasmic reticulum provides a large surface area for the metabolic activities of the cell. Secondly, rough endoplasmic reticulum plays a important role in protein synthesis, whereas smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of steroid hormones and lipids. Next up, we have Golgi complex or Golgi apparatus. As the name suggests, this was first described by Camillo Golgi. Therefore, it was named as Golgi apparatus or Golgi complex. So, Golgi complex consists of saucer-like compartments called cisternae. All of these compartments that you see are known as cisternae, which are the network of interconnected tubules. All of these are tubules which are interconnected to one another, and they are called cisternae. Or they can also be made up of vesicles at the peripheral region. Cell के periphery पे towards the side ये present होते हैं. अगर plant cells में Golgi apparatus present हो तो they are referred to as dictyosomes. So you can see the diagram of Golgi apparatus. यहाँ पे दो phases होते हैं. We have a concave cis phase and a convex trans phase. जो भी वेसिकल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी सारे सब्सटेंसेस बनेंगे ऑल ऑफ देम विल फर्स्ट कम टू द गोल्गी apparatus फॉर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड to every part of the cell wherever it is needed. So functions of Golgi apparatus is that Golgi apparatus is involved in the formation of lysosomes. It also responsible for the synthesis of cell wall and cell membrane. भी lysosomes की formation में कैसा होता है? Let us see. Lysosomes are single membrane bound organelles which contain various digestive enzymes. They have very strong hydrolytic or digestive enzymes which can even digest the whole cell. So अब क्या होता है जब भी हमारे सेल के अंदर कोई डिफेक्ट होता है and the defect cannot be cured, it cannot be repaired. So the lysosomes present inside the cells, they burst, and the enzymes present inside the lysosome, which is the hydrolytic enzyme, gets all over the place in the cell. So they digest everything which is present inside the cell. Therefore, lysosomes are known as the suicide bags. You can see that if the membrane of lysosomes happens to get ruptured, if the lysosome gets ruptured, the enzymes present inside, which are hydrolytic enzymes or digestive enzymes, they would digest the entire cellular structure, causing death of the cell. Therefore, it is known as the suicidal bag. You can see the anatomy of lysosomes. It has a lipid bilayer as the plasma membrane, and inside the plasma membrane, we have the hydrolytic enzyme mixture. So, lysosomes are involved in intracellular digestion of food particles ingested by the cell through endocytosis. किसी भी चीज़ का अगर digestion करवाना हो तो lysosome उस चीज़ के लिए responsible होता है. Secondly,
जो WBCs पर्टिकुलरली वाइट ब्लड सेल्स में लाइसोम प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेंस एंड अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. Next up we have ribosomes. Ribosomes are small granular structures which are made up of ribonucleic acids. RNA present होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वहां से ये राइबोसोम्स बनते हैं. और राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स. ये दोनों का कनेक्शन होता है प्रोटीन्स और आरएनए का. राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स होती है, larger subunit and smaller subunit, and ultimately both of these subunits or the whole of the ribosome is helpful in the synthesis of protein. क्योंकि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री, दे आर आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, इसलिए ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. सो यू कैन सी ये कैसे राइबोसोम प्रेजेंट है, उसकी दो सब यूनिट्स हैं. अब ये ग्रे कलर की है और एक ब्राउनिश से कलर की है. दीज आर द टू सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. अब यहाँ से ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है इनसाइड दिस राइबोसोम. सो फंक्शन इसका यही है दैट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. Next up we have vacuoles. अब vacuoles क्या होते हैं? Vacuoles are simply fluid filled sacs which are bound by a single membrane. और ये मेजरली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो प्लांट सेल्स में बहुत बड़े साइज के प्रेजेंट होते हैं, और अगर एनिमल सेल्स में होंगे तो इधर बहुत छोटे होंगे या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होंगे. तो वैक्यूल्स जब प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, इट इज फिल्ड विद सेल सैप विच कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, शुगर्स, मिनरल्स एंड इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स. Now if you look at the functions of vacuole, vacuole का क्या function है? Vacuoles storage bags की तरह काम करते हैं. They store salts as well as nutrients, और ये हमारे सेल में या फिर प्लांट सेल में जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, they work to maintain the proper osmotic pressure in the cell, ताकि जो प्लांट सेल है वो turgidity maintain करके रख सके. Now this is a flow chart जिससे आप vacuoles के function को easily समझ सकते हो. Vacuoles क्या store करके रखते हैं? Vacuoles store nutrients and they store water. Vacuoles contain small molecules and waste. Vacuoles can be central vacuole or food vacuole. अब अगर कोई वैक्यूल है, दो टाइप के वैक्यूल्स हो सकते हैं, तो सेंट्रल वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल. जैसे हमने डाइजेशन इन अमीबा देखा था. डाइजेशन इन अमीबा में जब स्यूडोपोडिया से वो फूड अक्वायर करा था, तब एक टेम्पररी फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो रही थी. तो जब भी एंडोसाइटोसिस के थ्रू बाहर से कोई फूड पार्टिकल अंदर आ रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब ये फूड पार्टिकल क्रिएट होता है, एंड दिस इज ये फूड वैक्यूल क्रिएट होता है विच इज टेम्पररी. और सेंट्रल वैक्यूल जो है वो परमानेंट है, जो कि सेल सैप को स्टोर करके रखेगा, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. दूसरा, ये सेंट्रल वैक्यूल सेल ग्रोथ के लिए भी अब अलाउ करता है. वैक्यूल्स किस चीज से बने होते हैं? वैक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स व्हिच इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर इन लाइसोसोम. लाइसोसोम के सिमिलर स्ट्रक्चर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एंड वैक्यूल्स आर आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. Next up we have mitochondria. Mitochondria are globular or cylindrical organelles. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हैज डीएनए ऑफ इट्स ओन. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. Next, the matrix of mitochondria contains enzymes which is necessary for the oxidation of food during respiration. क्योंकि यहाँ पर respiration होता है, इसीलिए ये एनर्जी रिलीज करता है in the form of ATP. क्या फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सिंथेसाइज करता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है which are known as ATP. Mitochondria also provides important intermediates for the synthesis of various substances such as chlorophyll, cytochrome. अब ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी नीड टू नो कि माइटोकॉन्ड्रिया और भी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोड्यूस करता है अपार्ट फ्रॉम एटीपी, जो कि हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अप वी हैव प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स जैसे डिस्क या ओवल शेप के ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में हमें मिलते हैं. प्लास्टिड्स तीन टाइप के हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स जो कि फूड स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जिनके पास कुछ टाइप का कलर प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होती है. ये क्रोमोप्लास्ट पर्टिकुलरली हमको फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में मिलते हैं. अब क्लोरोप्लास्ट ऐसे ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जिनके पास एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है विच इज क्लोरोफिल. अगर हम पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. यहाँ पर ये स्टोमा है, उसका मैट्रिक्स है.
ये जो एक स्टैक्स प्रेजेंट है कॉइन्स के, इसको हम ग्रैनम बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं। और ये ग्रैना का जो एक सिंगल कॉइन है, इसको भी कॉल थाइलाकोइड। जितना भी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। क्या फंक्शन है प्लास्टिड का? प्लास्टिड्स का फंक्शन है कि अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड एंड कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देते हैं वेरियस प्लांट पार्ट को, और क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द साइट फॉर photosynthesis. So this was it for today's video. We have discussed all of the cell organelles in detail as well as their structures. I hope everything is clear to you. If you still have any doubts, you can either comment in the comment box below, or you can email me on the email ID, which is boundlesslearning17@gmail.com. Thank you so much for watching. Keep learning.